Hello everyone, good morning. Give me a minute, give me a few minutes actually. I just need to check the background noise that's coming in. Hello. I'm doing good. I'm not doing. I don't have fever or something like that, but it's just that के 1 minute. हाँ. फिलहाल के लिए I have a temporary setup. So I formatted my PC. तो मेरा एक्चुअली पूरा सेटिंग्स जा चुके हैं OBS एंड ऑल के. Yeah, I'm doing good actually. All right. I'll just forward these links in. The groups and this thing. Give me a few minutes, okay? करते start. If you have any doubt or anything related to anything, just comment and I'll reply to you guys. Okay, typo. So sir, we'll be starting in 5 minutes. Just give me 5 minutes. Hit on my Instagram, the link. All right, cool. So am I audible? Is there a lot of noise coming in from my background? Yeah, turn the fan off. Cool. I think it's bearable now. ठीक है. Let's start this thing. Let's start. First of all, Nifty Bank Nifty के व्यू के साथ जाते हैं, and then we'll move on with market depth and everything. Okay. First of all, what's happening is how I am trading these days for intraday is what I usually do is in the morning itself. So आज थोड़ा late हो गया because as I said I'm feeling a bit under the weather. So usually what I do is early in the morning what I do is I try to figure out which stocks are actually moving the Nifty. Okay. And once I see these are the particular stocks which are actually moving Nifty, then only basically I go on ahead with taking my point of view.
it's mostly on a regular day the stocks like ICICI Bank and Reliance usually moves the Nifty. Okay, but some exceptions are there. Like sometimes what happens is like yesterday टाइटन जो है, टाइटन ने निफ्टी को थोड़ा मूव कराया था इन द फर्स्ट हाफ निफ्टी जो है टाइटन की वजह से मूव हुई थी अर्ली, राइट. So what I'm trying to do these days is कि I try to find out which stocks have actually moved in the first half and actually moving the Nifty, and I then check and go ahead with other stocks with like heavy weightage stocks वगैरह जो होता है वो स्टॉक्स के साथ जाता हूँ, एंड देन बेसिकली आई ट्राई टू प्रेडिक्ट कि कौन से स्टॉक्स आगे मूव करा सकते हैं निफ्टी को, राइट. तो येस्टरडे वो इट वाज टाइटन, डे बिफोर येस्टरडे इट वाज इन्फोसिस एंड TCS, राइट. तो IT सेक्टर मूव करवा रहा था परसों. अब कल की अगर बात करें तो कल भी देखा गया था. तो कल जैसे मैंने टाइटन बताया, सेकेंड हाफ में रिलायंस और ICICI बैंक जो है इन्होंने अच्छा खासा मूव दिया. as I can see here ये अच्छा खासा मूव आया था और रिलायंस मूव करवा रहा था. HDFC और HDFC बैंक भी एक हद तक रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द सेकेंड हाफ के मूव के लिए. बट मोस्टली what we usually do is we usually try and figure out which stocks have actually moved the Nifty, right. तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ निफ्टी जो नीचे गिरा है, राइट. निफ्टी जो यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है ये आ रहा है ICICI बैंक, रिलायंस एंड HDFC बैंक से. तो HDFC बैंक से थोड़ा आया है अच्छा खासा. IT से इतना खास नहीं है, इन्फोसिस से है हाउएवर, बट इतना कुछ खास नहीं है, और टाइटन से नहीं है, ना के बराबर है, राइट. तो इसको हटा देते हैं. तो फिलहाल के लिए व्हाट आई कैन सी इज दीज स्टॉक्स मूविंग निफ्टी. HDFC बैंक फिर भी मूव नहीं करवा रहा है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द टॉप स्टॉक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी को मूव करवा रहे हैं. लेट मी जस्ट चेक. एक मिनट देना. Also people, we are actually coming up with something for you which would help your trading journey. काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है. things you don't get it at free of cost or at a very cheaper price. We are actually coming up with some products for you guys. Wait for some time. You'll absolutely love it. So yes, stocks, as far as I can see, Maruti is also responsible for the movement जो आज अर्ली मॉर्निंग में आया है. ओके, तो अर्ली मॉर्निंग में जो मूवमेंट आई है उसके अंदर वो बेसिकली आई है मारुति से. कैन सी अ गुड होल अपसाइड कमिंग इन, राइट. दिस इज अ मूवमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना 5%, अप्रॉक्सीमेटली 5% का मूवमेंट देकर गया है, राइट. तो ये एक चीज़. अब सेकेंडली क्या है निफ्टी के बारे में. येस्टरडे की कल की ही बात है जब मैंने ये निफ्टी को एनालाइज किया था, और मुझे ये पता चल चुका था कि निफ्टी जो है ये नीचे जा सकता है, ठीक है. तो ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. रीज़न वाई आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर एन अपसाइड, बट ठीक है, नेवरदलेस जो भी हुआ वो हुआ. अब बताता हूँ मैं रीज़न उसके पीछे का. that's the first wave. सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक आई है. दिस इज़ द फोर्थ वेव. फिफ्थ वेव ए पूरा के पूरा ये A है, ये B है, एंड करंटली दिस इज़ द C वेव दैट्स गोइंग ऑन, राइट. तो C वेव जो है वो यहाँ तक आ सकती है. इट कैन कम डाउन टिल दिस लेवल. अगर मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चला जाऊँ तो मे बी और क्लियर दिखे पिक्चर. यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है. अब I'm not sure if that's the end of the B wave. Okay, I'm not sure about it
कि दैट्स द एंड ऑफ द बी वेव. It can be, it may be, it may not be the end of the B wave. Okay, let me check. Kind of is. It is kind of the end of this thing. If that's basically going to happen, तो उसको zigzag कहेंगे हम लोग, ना के flat. ठीक है? That's a zigzag. That means a sharp fall is expected, you can say. ठीक है? तो एक fall आप expect कर सकते हो up till this low, that is yesterday's low. ओके, yesterday's low तक वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड. वीवैप भी हमारा क्रॉस कर चुका है, RSI भी जो है अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड टिल दिस पॉइंट, दैट इज 15,357. दैट्स इन फ्यूचर्स. ओके, माइंड यू दैट्स इन फ्यूचर्स एंड नॉट इन इंडेक्स. इंडेक्स के लिए पकड़ के चलो 400. ठीक है, अब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने बना लिया. कि देखो मार्केट जो है टेक्निकली एक नेगेटिव साइड में रहेगा, लेकिन ये गलत भी हो सकता है. ओपन इंटरेस्ट जो है ये आपको कुछ और बता सकता है. ठीक है, तो करना क्या है, उसके ओपन इंटरेस्ट में आ जाओ, चेंज इन OI चेक करो. चेंज इन OI के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस पुट साइड में बैठी हुई है. देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एंड ये आप गार्ड बांध के रख लो. बड़ा पैसा जहाँ पर है उसके अपोजिट में बेट करो, What happens is whenever big amount of money flows in at a particular side, on a particular side of the OI, usually that's not the direction, that's not the direction the market is going to move. Market usually moves on the opposite direction. Okay, so in this case, if it is on the put side, if the PCR is actually going up, okay, if the PCR is actually going up, there is a likely possibility that Nifty is going to go up. Okay, एक चीज़ लेकिन यहाँ पर मुझे जो अच्छी लग रही है फ़िलहाल के लिए, इस करंटली द PCR इज़ फॉलिंग. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि पुट साइड के पोजीशंस ऑन द पुट साइड आर बीइंग एग्जिटेड एंड पोजीशंस ऑन द कॉल साइड आर बीइंग ट्रेडेड. ओके, तो देखो, it won't be fair to call this a institutional or big player money. It won't be fair to call these positions to be a institution or big player money, because sometimes what happens is institution enters, sometimes what happens is retailers enters. ठीक है, तो वो दोनों के भी पावर के वजह से हो सकता है. It can be because of both of them, but the thing which is more important here is कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है. few people actually like to call it a institution money, few people like to call it retailer money. ठीक है, in a way अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो बोलो idiot money. ठीक है, तो idiot money क्या होता है? Idiot money is basically the brainless money, जो ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करता है. ठीक है, और स्पेकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं. अगर पुट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस बनी है, इफ़ द पोजीशंस आर ऑन द पुट साइड, देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी द स्टॉक इज़ गोइंग टू मूव अप, द इंडेक्स इज़ गोइंग टू मूव अप. इफ़ द मनी इज़ ऑन द कॉल साइड, देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी द मनी इज़ गोइंग टू मूव, द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव डाउन. Currently what's happening is PCR gives you the proper point of view. Okay, but this website has an issue. There's a delay. Okay, there's a delay in this one, so never mind, that's not a big deal actually, to be honest, but that's fine. Stock जो है यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, उसके बाद में नीचे गिर रहा है. The PCR is actually falling here. If the PCR is falling, Nifty also falls. ठीक है, एक्चुअली द सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज द निफ्टी इज़ फॉलिंग. यहाँ से पुट साइड के पोजीशंस जो है वो कटे गए हैं. द पोजीशंस ऑन द पुट साइड हैव बीन एग्जिटेड एंड द कॉल साइड पोजीशंस हैव बीन ट्रेडेड, समथिंग लाइक दैट यू कैन से.
But the thing is that that's again speculation and stuff. Don't worry about it. Currently the market is the PCR is going down, so we can expect it. ठीक है. Currently for now the market can go down for a while. Market can go down for a while. Let's move on towards Nifty 5-minute time frame. Okay. I basically I have some set of criteria or filters after which I take my trade in Nifty, I take my trade in any stock or something like that. Okay. So daily what I usually do is I take an intraday trade in equity and I take a scalping trade in Nifty, right? Currently there is an opportunity in Nifty where we can trade Nifty for approximately you can say 30 to 40 points. Approximately we can scalp it. Since it's an expiry, 30 to 40 points can be easily achieved. I'll tell you when. So currently the low that has been created, the low of the green candle that you see over here, after the breakdown of that candle, yes, we can trade it. Students already know what strategy I'm talking about here, but I need a good volume after for the breakdown. I'll give you a call right now. It's Nifty 15550 PE. Breakdown is happening. Volume isn't that good though. But since we have a bearish point of view, we can take an entry. I want you to not take entry right away. I want you to wait for some time. Okay, this candle is going to give the whole targets. I'll tell you what's the whole thing. So currently it is trading at 99.97. I am expecting 130 to 135. 130 to 135. Stop loss. Wait, don't. If you are taking an entry, I would recommend wait for some time. Okay, because the risk to reward ratio is not on your side. I am expecting 130 135 as my first target, but the thing is if you try to take entry right away, currently what's happening is the premiums are pumped up. Okay, why? Because of Vega, right? Plus the stop loss is around that area. So if you are taking trade right away, be aware of that. Your stop loss is going to be approximately around 70. So the risk to reward ratio that you will be getting might be just 1:1, right? So maybe you can maybe 130 target can be achieved very easily. 130 135 target can be achieved very easily, but the risk to reward ratio isn't that good. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आ रहा है फ़िलहाल के लिए, ये इतना अच्छा नहीं है. डू नॉट गो ऑन जंपिंग राइट अवे. थोड़ा रुको. कैंडल क्लोजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, डोंट बी an impatient trader, or you can say trader where you basically want to trade compulsively. ऐसा मत करो, थोड़ा रुक जाओ. 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है. इसकी मार्केट डेप्थ में देख के कोई फ़ायदा नहीं है. हम निफ्टी फ्यूचर्स देखेंगे, मार्केट डेप्थ देखेंगे. लेकिन ये मूवमेंट आ कहाँ से रही है ये भी जानना ज़रूरी है, राइट? ऐसे ही नहीं कर सकते कि आ रही है तो मूवमेंट आ रही है बस. नहीं, लेट्स चेक. एक तो अडानी पोर्ट से आ रही है, सेम सेटअप. अडानी पोर्ट्स उतना इफेक्ट नहीं करता है. ओके, अडानी पोर्ट्स डजंट इफेक्ट निफ्टी अ लॉट. It just gives a thing, but it's not that effective. ICICI Bank se aa rahi hai. You can see the breakdown is not yet happened, and it's basically on the verge of not giving a breakdown. So just keep an eye. Reliance is the one who's pulling Nifty down, same as yesterday, where it pulled Nifty down in the second half. After what? After 11:40. It's the similar setup. But why is Nifty not going down? Even if Reliance is pulling it, why is Nifty still resisting, or not trying to take the pressure from Reliance?
HDFC is also doing the same thing like ICICI Bank. Infi is also doing the same thing, and TCS is on the VWAP. You have to wait. You have to wait. रिलायंस दे देगा, सब दे देगा मूवमेंट, लेकिन यू हैव टू वेट. थोड़ा रुको. रिलायंस भी ऊपर आना शुरू कर देगा ऐसे प्रेशर के थ्रू. ओके ये नीचे चला गया. ओके कूल कूल, जाने दो. अब हम क्या करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं. छोटा स्कैल्प ट्रेड लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी चाहिए हमें. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स अ लोअर टाइम फ्रेम like this. Current price is 108. I want you to wait for some time again. Few minutes ruk jao. Entry at this point again can be a bit risky. You can take a trade. 109 के आसपास चल रहा है. 109 के आसपास you can enter. I am not entering because मुझे risk to reward ratio इतना handsome नहीं लग रहा है, और I would have traded right away. Okay, to be honest. So 109 के आसपास we can enter. We can keep the stop loss of approximately I would say 87 or something, and the target at approximately 130, 135, 108, 109. I'm not entering again. As I said, I'm not going to enter as I don't feel comfortable here. I don't feel comfortable here with entering with a bad risk to reward ratio, or I would have taken the trend entry right away. And the stop loss can be hit. Stop loss is hit. So you have to, as I said, listen, risk to reward ratios and everything is really important for me. अगर ज़बरदस्ती ट्रेड लेना है तो उसके लिए भी कॉल्स आ जाते हैं. Okay, so just try to understand कि while you take entry in a movement like this, what happens is, in a regular movement, like let's say like this movement, a slow but steady movement, if this is 100, and this top is actually, let's say, 110, okay, on a regular movement. So on a fast movement like this one, right, on a fast movement like this one, if there is a single candle movement like that, this could be 118. And especially on the day of expiry, it can even go up to 122, 125, right? Why is this? Vega. Okay, volatility. You just have to understand volatility जैसी बढ़ जाएगी, जैसी Vega बढ़ जाएगा, right? What's going to happen is the premiums are going to get pumped. As soon as ये premiums जो है ये pump हो जाते हैं, ये premiums pump हो जाते हैं, seller यहाँ पे बैठ के मस्त मक्खन खा सकता है. Right? So also when there is a huge volatility, 2 से 3% जब निफ्टी मूव कर जाता है, usually those are the days where you create a straddle. Okay, so usually these are the days where you create your straddle. So always remember, Vega, premium, DK, वेगा जो वोलेटिलिटी होती है वो हमारे लिए कभी भी डीके के लिए, डीके हमारे साइड में नहीं होती है, बायर्स के साइड में नहीं होती है. So just remember that part. Okay, let's move on with market depth. Quick market depth क्या होता है? Market depth is basically where you see the marketplace, you can say. ठीक है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, whenever we go to the market, where you know सब्ज़ी खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है, तो क्या होता है कि भाव किया जाता है, बायर आता है, सेलर होता है, बायर होता है, सेलर होता है. ये यूजुअली चीज़ें होती है. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि
we basically see the whole marketplace where we can see the buyers as well as the sellers. Let me know what language do you want me to go on with. Hindi और English दोनों रहेगी वैसे. I'm going to repeat it in English and Hindi both as well. Yet, आ गया. ठीक है, पेंट में करता हूँ. पेंट में ही करना पड़ेगा. Is there an extension for that? 1 minute, 1 minute. Give me a minute, okay? Give me a minute. I'm just alright. I'll be going on with the stock, okay? Because stock समझने के लिए थोड़ा easy होता है. Index के लिए it can get a bit tricky क्योंकि numbers बहुत बड़े होंगे as you can see. Numbers can be big. ये वाले so थोड़ा tricky हो सकता है. मैं while I explain it. Let's go on with Reliance. ICICI बैंक देख लेता हूँ. ICICI बैंक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो ट्रिकी हो जाएगा. ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं हम लोग. लेट्स गो ऑन विद दिस थिंग, ओके. वेयर इज एक्सटेंशन? ऑलराइट, perfect. This is a good one. So it's moving towards this thing, desired targets and all. Do I change it? Okay. Brush. Perfect. Okay, I have set it up. Just go on. अब erase करना. Perfect. I'm so sorry. Took some time. Let's go on with this, okay? So what usually happens is in a market there are buyers and sellers, okay? Similar to that, in the market depth में भी buyers होते हैं और sellers होते हैं, okay? तो मार्केट डेप्थ हम लोगों को क्या बताता है? मार्केट डेप्थ हम लोगों को ये बताता है कि कौन से प्राइस के ऊपर कौन से बायर्स या कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने ज़्यादा बैठे हुए, कितने कम बैठे हुए और क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 1 मिनट. हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस? वांट टू दिस. हाँ, गुड. टाइम लगता है थोड़ा समझने में. रिलायंस का चार्ट ओपन कर देते हैं. Why is it so hard? Understand? टेंशन. ओके, ये बंद कर दिया, हो जाएगा सब. कूल. A minute, okay? Just a minute. I'm so sorry for this. So bad at this. Perfect.
बायर्स एंड सेलर्स. ओके, तो यूजुअली क्या होता है, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं. ओके, नाउ व्हाट डू वी यूज़ द मार्केट डेप्थ फॉर बिफोर दैट बायर्स और सेलर्स के बारे में कुछ चीज़ें. सबसे पहली चीज़, अगर मान के चलो यू हैव अ शॉप, यू आर सेलिंग समथिंग, लेट्स से, ओके, एंड देयर आर, लेट्स से यू आर सेलिंग योर, देयर इज अ पेन, अ गोल्डन पेन, एंटीक पेन है, ऑक्शन के ऊपर जा रहा है. अब ऑक्शन में जब जा रहा है, what's going to happen is there are going to be multiple buyers, but which buyer are you going to prefer? The buyer who is ready to give you the highest amount of money. Okay, obviously the buyer who is ready to give you the highest amount of money, so you usually go on with that buyer. So what happens is, on the buying side you'll always see the person or the buyer who is ready to give the highest amount of money on the top. The buyer who is ready to give you the highest amount of money on the top, and then the lowest, it basically goes down. So you can see यहाँ पर 2476, 2475, 247545, whatever it is. What's happening is, जो सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है, the buyer who is ready to give you the highest amount of money will be on top. Then comes the selling side. Selling side में क्या होता है, मान के चलो टमाटर जो है मार्केट में 4 लोग बेच रहे हैं. अब चारों के पास जाओगे, एक बोलेगा 10 रुपये किलो, दूसरा बोलेगा 12 रुपये किलो, तीसरा बोलेगा 8 रुपये किलो, चौथा बोलेगा फिर से 11 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और समथिंग लाइक दैट, राइट? विच सेलर आर यू गोइंग टू प्रेफर? You're going to prefer the seller who is ready to give you the tomatoes at the cheapest price. सबसे सस्ते में जो देने के लिए रेडी है वो यहाँ पर होगा. Listen, मार्केट डेप्थ सिर्फ रीड करने के लिए नहीं होता है. व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर एज वेल, उस टाइम पे मार्केट डेप्थ की हेल्प लेनी पड़ती है. इलिक्विड स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं किया जाता है, वहाँ पर यू नीड मार्केट डेप्थ. तो इफ़ वी गो ऑन विथ, लेट्स से, एनी अडानी पोर्ट्स का इक्विटी ऑप्शन, इफ़ वी गो ऑन विथ इक्विटी ऑप्शन ऑफ अडानी पोर्ट्स, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लिक्विडिटी होती है कम. एंड एज द लिक्विडिटी इज़ वेरी लेस इन अडानी पोर्ट्स और एनी इक्विटी ऑप्शन, वहाँ पर क्या होता है, इवन इफ द प्राइस इज़, लेट्स से, 50 रुपीज़, इवन इफ द प्राइस इज़ 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ पे वो ट्रेड नहीं होने वाला. आई गिव यू एन एग्जांपल. अडानी पोर्ट्स कहाँ पर चल रहा है अभी फ़िलहाल? एकदम पास वाला लेंगे हम लोग, जहाँ पे लिक्विडिटी फिर भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 680. CE. ओके, अब यहाँ पर अगर प्राइस 11 चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बाय करने जाऊँ, मैं अगर सेल करने जाऊँ तो 11 रुपये पे ही सेल होगा. मेरा सेल होगा 10.85 पे, where the first buyer is. Okay, so even if the price is 11 rupees there is no way that I am going to sell it at rupees 11. Either the buyer has to come down to 11, come up to 11, and then my trade will be executed. You can see right away few orders were executed at a single time, and it went down from right away 11 to 10.6. Right, I feel like there is a issue with market depth currently because it's lagging. Okay, there's one more thing that I want to tell you is कि यहाँ पर जो हम लोग market depth देख रहे हैं for illiquid, equity options, Zerodha has an issue. The top 5 market depth they show एकदम correctly, but as soon as you go to 20, the numbers changes. Okay, there is some glitch or something, some issue with that. So I don't trust the 20 market depth when it comes to illiquid stocks or illiquid securities. Okay, so just understand that part. Okay, just go on with 5 market depth. It moves faster as compared to the 20 market depth, as I have seen, I have experienced it earlier. Coming back now, let's say we are going on with 20 market depth. Why do we use 20 market depth? So why do we use the market depth? So market depth, you cannot use it
don't understand anything, please try to teach it in English. I am trying to teach in English, sir. I am trying to mostly trying to teach in English. So usually what happens is, whenever we are in a trade, we try to look at the market depth. We do not try to look at the, so yes, it is true that whenever we are going to, before entering the trade as well, we have to look at the market depth as well. Because what usually happens is, if there is a support or resistance, there is going to be a higher amount of orders at a particular place, right? So a trader like you and me, okay, so first of all you have to try and understand that if there is a bid, there are bid orders, buyer or buying orders or selling orders there, okay, if there are buying orders or selling orders there, this means that these orders were placed in limit order, SL order, you can see limit order, not in market order, SL order, and many more, okay, but not in market order. These orders are not market orders. What does that mean? This thing that you are looking at, yes, it is true, whatever the story is going to happen, it is true, but it is a half story. 50% of what the orders, I would rather say 50%, 50 to 60% of the orders comes from the limit order, okay. But yes, it is also true that stop loss orders are mostly placed as compared to the entry orders, okay, in a limit order. So what you can say is 50 to 60% orders that are coming down here are the entry orders, but 70% of the orders, 70 to 75% of the orders mostly here remains of the stop loss orders, okay, exit orders usually. Stop loss or target, maybe some people also prefer to keep it as a target order, right? So these are mostly the exit orders, can be on the buying side, can be on the selling side, both intraday mein dono kar sakte hain hum log, right? So just try to understand this part. Again, the second thing, whenever you see a bulk of orders on a particular price, so over here 74.00, exactly on 74, Reliance is currently, oh, so there are too many these things, it's not mine though. $74. Is there something on 74? Give me a minute. Can you give me a minute? Yeah, excuse me. So, so sorry. Right. So usually what happens is, I'll tell you one thing about these types of orders, okay? I'll tell you one thing about the market depth. The orders, so Indian tendency, okay? I'll tell you about something about Indian mindset or Indian tendency. So people in India, we have a thing called round figure, okay? We have a thing called round figure. What does that mean? Everything that ends with 0 or something like that, okay? So usually what happens is, in the market depth, don't be fooled with bigger orders on 73, 72, 74, 75 or something like that. The reason for that is because Indians tend to exit off whenever there's basically 0.00, okay? Enter or exit in the round figure zones. So if you see orders, higher orders on 77, 76, 78 or anything else, right, don't be worried about it. That's pretty normal, okay? We don't have to look at round figures or the whole, numbers without any decimals, okay? So just remember this, first of all, 100 is going to be 100 will have highest, so 100, 200, 300, 400, these will have the highest amount of orders, okay? So if in this case 2400,
2500. These are going to be the numbers where you'll find the highest number of orders. Okay, don't be worried about it. Kuch nahi hai. It's just a normal. Yes, it is going to act as a temporary resistance, but it support or resistance, but it won't affect a lot. It won't affect the markets for a very long time. Okay, that's one thing. The second thing that you have to understand, what's happening. Okay, good. The second thing that you have to understand is market depth is mostly used on supports and resistances. In this scenario, this is basically the low created. That is basically, let me just check. What's the low here? The low here is 70.2, 2470.2, 2470.2. I'm going to keep a support there. 2470.2. Whenever it comes down to 70, we have to look on the buyer side. Again, one more thing. If you are basically looking at a resistance, let's say we are going on with the resistance of, let's say, the high of this one, 24.24882.35, 82.35 here. Okay, so if we are looking at the resistance, we have to look at the seller side. If we are looking at the support, we have to look at the buyer side. Okay, I hope this part is clear. If you want to enter, let's say if you want to place a buy order, okay, you have to look at what's happening on the seller side and not on the buying side. You'll understand that higher amount of orders, if higher amount of orders are flowing towards the selling side, there is a likely possibility that the market is going to fall down, that particular stock is going to go down. Okay, so just remember that part. Okay, this P has moved towards our target 23 or something like that. Cool, that's fine. Moving on. So mostly what happens, so you can see 71, the support is approximately around this area. What was the low? 70.2. Excuse me. बोलो नहीं. Right. So usually you can see we have to look at the market side. Okay, the buying side right now. Okay, it is 71. अगर ये जल्दी fill हो जाता है, so can you imagine 3,800 and so 900 order, 3,900 quantities are being traded at 2,471. Okay, if that get filled in, जो fill हो चुके हैं, can you imagine the amount of money that flew there? Can you imagine if you just multiply 2,500, 2,400 by 3,000, whatever the amount was, whatever the number of quantities were, can you imagine the money that would have flown in there, right? If those orders got filled in like in a jiffy, like right away. Okay, yeah, so if that amount of money got filled in like this, like in a snap, can you imagine how bearish the market is right now? There is 10,000 quantities trading at around 70, which got filled. Can you see? No, which did not get filled. नीचे गया था लेकिन it did not get filled. फिल नहीं हुआ है, फिल हो चुका है. मार्केट डेप्थ में कुछ इशू है. देयर इज सम इशू विद द मार्केट डेप्थ राइट नाउ. एज फार एज आई कैन टेल यू, देयर इज एन इशू विद द मार्केट डेप्थ. कुछ तो डीले है. ज़ीरोधा हैज़ सम इशू राइट नाउ एज फार एज आई कैन टेल यू. It doesn't happen like that. So these 10,000 quantities got filled. 10,000 quantities multiplied by, if you just 2,400 multiplied by 10,000, what's that?
lakh, 10 lakh, crore, 2.5 crores amount of quantity within a millisecond. Within a millisecond. Can you imagine 2.5 crores of money in just a millisecond, right? That means the intensity of the sellers, is very high right now. There is a likely possibility that Reliance will slip down from this level like anything in a very quick manner. As I said, it is going to move down quickly and very fast to a very lower level, can basically go on till even 50 or 60 rupees very easily. Okay, so you have to understand if big money, a big amount or chunk of order is at a particular price, that will be acting as a support or a resistance. If it is on the buying side, it will act as a support. If it is on the selling side, it will act as a resistance. Okay, so if it is on the support side, it will act as a support. It is on the buying side, then it will act as a support. Selling side, a resistance. So just try to understand here, okay, if there are higher amount of orders on the buying side and it got filled, so that means the market is pretty much bearish. One more thing I'll tell you about this thing. Once these limit orders of the buy side or entry orders have been executed, there are going to be sell side orders as well. Have you heard of the term called stop loss hunting? Right? So stop loss hunting is pretty common these days. Why do I say that? Because every time there is a breakdown, let's say there is a breakdown from here, what usually happens is retail traders, they tend to keep their orders, they tend to keep their stop loss orders right above this thing. Where is draw tool here? I don't get it though. Right after they enter below the breakdown candle, what they do is they keep their stop loss just above the high of this one. Big players or big traders, what they do is, as soon as this buy order or sell order is executed here, after the breakdown, we are trying to get a entry in the sell side. What these big players are going to do is they are going to pump their money and they are going to make sure this stop loss is hit. Why is that? This is known as pump and dump usually. They'll pump basically 5 crore amount of money. They'll pump 5 crores amount of money where basically the stock fell down. And as soon as it goes down, here, where everyone is trying to sell, the amount of orders here will be approximately 50 to 60 crores. But it took them just 5 crores to push Nifty to these entry orders, push Reliance to these entry orders. Just 5 crores. It took 5 crores for them so that these limit orders, where approximately 50 to 60 crore worth of orders are there to make it get executed. Okay, so as soon as low cross हो गया है, entry orders इनके hit हो गए 50 से 60 crores, जहाँ पे everyone is trying to sell it, what's going to happen is these big players, they already know where the orders are, because हम लोगों को 20 market depth मिलता है. They don't get the market depth as 20, they get the whole market depth, the whole list of market depth. They have the whole list of market depth. तो वहाँ पर what they do is 50 to 60 crores of money जो है वहाँ पे pump किया जाएगा. 5 करोड़ इन्होंने sell किया था, 5 crore worth of shares were sold, so that the market went down. As soon as the market went down, 60 crores amount of money will be 50 to 60 crores amount of money will be bought. And they know that these 50 to 60 crores of worth of money, they have stop losses at this point. So what's going to happen is, यहाँ पे buy किया 50-60 करोड़, और यहाँ से यहाँ पर जैसे ही आ गया, यहाँ पर what they did is they basically approximately 50 to 60 crores of worth of shares were again bought here. जहाँ पर
यहाँ पे सेल किया था तो इन्होंने बाय किया था, और यहाँ पे अब ये लोग सेल कर रहे हैं। तो जिन लोगों का एंट्री ऑर्डर हिट हुआ था उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली बाय ऑर्डर होगा। तो इन ये लोग जब सेल कर रहे हैं, दे आर बेसिकली द रिटेलर्स आर एक्चुअली बाइंग। सो दिस इज नोन एज स्टॉप लॉस हंटिंग, वेयर दे लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़, 5 लाख का लॉस, and they made a profit of approximately 60 to 70 lakh. So this is how basically the big players usually play. So for you to understand that, you have to keep on looking at the market depth. Again, market depth समझना जो है ये इतना easy नहीं है. As easy as I'm basically trying to explain it, it's not that easy. It needs your eye to, it needs practice. So your eye won't catch it right away. Even if I'm trying to explain it to you कि support हो सकता है, resistance हो सकता है, for you to try and understand the exact meaning of it, you have to look at the market depth. So I have a limit right now, because there can be thousands of exceptions. There are going to be thousands of different variations that are going to happen in the market depth. I cannot teach you all those things in just 15 to even if I sit here for 6 hours, I cannot teach it, right? For you to understand what is market depth exactly, you have to try looking at the market depth every day. So it took me approximately 6 to 8 months to get a hold of market depth. Still, I would say that I am not an expert in reading market depth. There are people out there who knows who is sitting on what order. If there is a big player, so what usually happens is, this page isn't working. Good God, 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐿𝐴. It just can be with my browser issue as browser issue. I think it is a browser issue. I think it is not a browser issue. Yes, 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐿. So bulk deal, usually you'll see at a particular price, at a certain price. Yeah, did I use any kind of technical analysis while saying it might go down to 60 rupees, it might go down to 50 rupees? Did I use it? No. What was the simple thing that I did? What was the one simple thing that I did? At 70 rupees, we saw 10,000 orders, which got filled in a millisecond. And what happened is history, it is coming down to 60 rupees. All I said is, if 2.5 crores worth of shares, 2.5 crores worth of share got filled in just this less time, the Reliance, this stock is too bearish. It is bearish. Again, 50 or 35 target got hit as well. So that's a different story. Yeah. So do you get it? The intensity of bullishness or bearishness can be read just from the market depth. Okay. So mostly before entering, while entering the stock, look at the market depth, and after entering the stock, look at the market depth again while you are in the trade. Okay, so make sure थोड़ा market depth को समझो. So I did my part. Supports, resistance, entries, stop loss, targets. These are basically the areas where you have to focus on. Everything else is just temporary. Okay, just try to understand this. Everything else is temporary. Whatever you are looking at in the market depth, it's all temporary. Okay. Let me know if you guys have any doubt or anything.
Also, while we started this webinar, Nifty was trading at approximately here. What did I say? It is going to fall down to this level. What's happening? It is falling down to this level. Again, wave theory. Simple and easy wave theory. Almost there on our target. Right? What did I say? 30-35 तक hit करेगा. 30-35 तक hit किया. Problem क्या थी? Vega, risk to reward ratio. This was the problem. Vega और risk to reward ratio के वजह से हमारा stop loss खा गया. That was the only reason. जहाँ पर थोड़ा ऊपर चला गया तो हमारा stop loss चला गया. Right? And again, that was the only reason why I did not enter from my account. Right? You have to understand these are very minor details जो लोग भूल जाते already give ऑलराइट. बहुत छोटी डिटेल्स है. ऑप्शन हेजिंग का कोर्स आ रहा है. रादर आई वुड से बूट कैंप आ रहा है. आई वुड बी रिलीजिंग द डिटेल्स दिस वीकेंड. वेरी मिनिमल कॉस्ट के ऊपर होगा. वेरी मिनिमल कॉस्ट, एज लो एज 1500 और 1200 रुपीज़. इतने लो पे मैं रखना लो. वन थिंग I would want all the students to know that all the students hedging course is not going to be free for you. Even if you have the lifetime wala thing, hedging course is not going to be free. You have to pay for it. I have already given enough courses, I guess 3 courses till now. Wave theory दे चुका हूँ. 2 technical analysis वाले course दे चुका हूँ. So I won't be going on with the lifetime course free courses. I would be going on with lifetime free advisory, but not courses. So yeah, this weekend I'll be posting the details of the hedging course. Very minimal cost. This will be, since this is going to be the first batch, I am going on with a very minimal cost, but the prices will be increased. With time. Okay. Do let me know if you guys have any doubt. Regarding this webinar, regarding this market depth. I'll be giving out my trades and point of view further ahead. What happened? 60 rupees. What did I say? Just a single minor detail of market depth. It basically gives you confidence. So I have a set of rules before entering a trade. Okay. But once I am in a trade, I am human. I am a trader. I will be having second thoughts. Second thoughts आते हैं कि भाई मैंने ट्रेड ले लिया, ये सही जाएगा या नहीं जाएगा, लॉस हो सकता है लॉस. सेकंड थॉट्स है, राइट. तो करना क्या है? कुछ नहीं, मार्केट डेप्थ देखो, चुपचाप मार्केट डेप्थ देखो और चार्ट्स देखो. प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कभी नहीं जाना. माइंड यू, while you are in a trade, if you are looking at your PNL, this is going to cost you. FOMO, heartbeats, impatience, anxious, सब हो जाओगे. जितने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं ना, उतने सारे मूड स्विंग्स एक ही टाइम पे हो जाएंगे बैठे बैठे. पोजीशंस, कैश जो अमाउंट मूव कर रहा है उसको मत देखो. हाँ, कीप योर ऑर्डर रेडी. इफ़ यू आर इन अ ट्रेड, keep your order ready for exit order, square off order, or whatever it is. Even if you want to add something else, keep those orders ready, but never look at your PNL while you are trading. Your PNL is just numbers. The main thing happens on the chart, the main thing happens in the market depth, and that's what we are going to look at. Okay,
Do let me know if you guys have any doubt or any query regarding this market depth. Am I audible? Or am I just talking to myself? Yeah, I am. Apparently, yes. Perfect. Cool. Let me know. Go through this through this webinar if basically you're looking at the webinar later tonight or later at any time once the live is over. Do let me know in my on my WhatsApp. There's my WhatsApp number on the screen. You can just text me on my WhatsApp or comment on this video and let me know if you have any kind of doubt or anything regarding it. I would happily revert as soon as possible. Okay, so yeah, going down again. um we did make a C wave there, but it's not a resistance, to be honest. Resistance बन चुका है वहाँ पे. So whenever the angle of the resistance is like this now, whenever the angle of this resistance is like this, which is very steep, okay, it's a weak resistance. You have to understand this. It's a very weak resistance. It's not a strong resistance, to be honest. It's a very weak resistance. To break this resistance, it won't even take few orders. It won't even take few orders to break this resistance. So a resistance like this, I would recommend you to, um, consider it a good hole resistance, big resistance. It's a very small, weak resistance. It doesn't help a lot, to be honest. यहाँ पे सो हीरो ज़ीरो कॉल नाम से कुछ चीज़ होती है. मे बी आई कैन गिव यू हीरो ज़ीरो कॉल यहाँ पर, बट द थिंग इज़ ठीक है, तो वैसे भी होने वाला है. A simple trade again I'm telling you, it was a simple trade. Just market depth से keep your eye there. मॉर्निंग में भी मैंने क्या बोला था? मॉर्निंग में मैंने बोला था व्हेन वी स्टार्टेड दिस थिंग, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आया हमारा. फिर मैंने OI से भी बताया. OI ऑल दो ऊपर जा रहा था, लेकिन मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, पहले तो ये नीचे जा रहा था, तो मैंने बोला और नीचे जा सकता है. लाइकली पॉसिबिलिटी कि पुट साइड के अंदर जो है इनके पोजीशंस जो बने हुए हैं, ये हट के कॉल साइड में पोजीशंस बन सकती है. व्हाट्स हैपनिंग इज कॉल साइड में पोजीशन बनी है. इडियट मनी स्टार्ट्स टू फ्लो ऑन कॉल साइड instead of put side, right? So this thing you have to try and understand it. Okay, idiot money is really important. Okay, can be retail money, can be big money, we don't know. So what we call it as idiot money. idiot money है हमारे पास, हमारे डायरेक्शन में idiot money फ्लो कर रहा है. कैसा बनाओ, जिस डायरेक्शन में idiot money फ्लो होगा उस डायरेक्शन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट होगा. उस डायरेक्शन के अंदर स्टॉक्स का मूवमेंट होगा. 60 बोला था, 50 बोला था, दोनों टारगेट हिट कर गए. अब 50 के ऊपर कितने ऑर्डर्स है? 21,000 ऑर्डर्स. कैन यू इमेजिन दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ अमाउंट ऑफ मनी. ऑर्डर्स अभी भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं. 18,000 ऑर्डर्स, 18,000 क्वान्टिटी, सॉरी ऑर्डर्स इधर होता है. 6,300, 860, जस्ट 1,000 रिमेनिंग, जस्ट 1,000 ऑर्डर्स रिमेनिंग. क्या हुआ? क्या हो रहा है नीचे? क्या हो रहा है? 47 क्या लो बना है? 47 और जा रहा है नीचे, 30 तक जा सकता है इजी. सपोर्ट है कहीं पे? लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज अ सपोर्ट और समथिंग. बट 46, 45 approximately.
सपोर्ट इतना खासा है नहीं वहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट. इफ़ आई जस्ट गो ऑन विद द सपोर्ट ऑन रिलायंस ज़ीरोधा के ऊपर, इट्स रियली हार्ड टू बी साइज. इफ आई से माइनर है, नॉट अ बिग वन, इट इज़ इफेक्टिंग इट दो. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 51 पॉइंट समथिंग 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 वहाँ पर है, अच्छे खासे ऑर्डर्स है. देखो एक और चीज़, वंस यू सी अ हायर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन अ यू नो बाइंग साइड लिमिट में, मैंने क्या बोला था, 50% ऑफ द स्टोरी येस इज 50 to 60% ऑफ द स्टोरी इज मार्केट डेप्थ. दैट्स ट्रू, बट remaining 50, so in this scenario, in current scenario, in today's scenario, what's happening is ki it is following the trend, it is completely following the trend and going down. But on a regular day, where you say कि you know what, there are higher basically amount of trade quantities there, so I'm going to go on with a selling side. It doesn't happen like that. Okay, it doesn't happen like that. Why? Because 50 to 60% of the orders can be seen in the limit order or stop loss order format in the market. But what if the market starts to go down and the remaining 40% of the order starts to flow in, where the sellers are weak now, and these 40% of the orders are in a market order? What's going to happen is right away going up, pump and dump, right? So pump and dump वाला जो चीज़ है वो मार्केट ऑर्डर में होता है, वो लिमिट ऑर्डर में नहीं होता है. द पंप एंड डंप थिंग doesn't happen in a limit order, it always happens in a market order. You have to understand 50 to 60% of the story, yes, it is true. The probability of it going down is high, yes, that's true. But there is other side of the story as well. So you can see if 49 पे चल रहा है लेकिन मार्केट डेप्थ 50 पे चल रहा है, ज़ीरोधा का कुछ इशू चल रहा है, पक्का इशू चल रहा है. सो ध्यान में रखो कुछ. जब जैसे ही व्हेन यू गो ऑन राइट अवे विद 20 मार्केट डेप्थ ना, ज़ीरोधा के सर्वर्स लोड नहीं लेते. एज सून एज यू गो ऑन विद 5 मार्केट डेप्थ, थोड़ा थोड़ा तभी फिलहाल जो एक्चुअल में होता है वो दिखना शुरू हो जाता है, राइट? सो रिसेंटली येस आई एम लुकिंग एट सम फ्यू सर्टन थिंग्स के there are some issues going on with this thing, Zerodha's market depth. So be aware of that as well. Okay, so higher amount of orders is just 50 to 60% of the story, higher probability, yes, but that's not the whole truth. You have to understand pump and dumps doesn't happen. Market orders अगर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करना चाह रहा है तो वो भी जो है रोक सकता है. अब आप बताओ कि लेट्स से कि आई हैव बॉट अ स्टॉक एट ₹100, 100 रुपीज़ पे, 2 दिन से 3 दिन से ऊपर जा रहा है, 130 तक आ गया, 30% प्रॉफिट मैंने बना लिया. मैं बुक करूँगा 130 राउंड फिगर पे मैं बेचूंगा, राइट? एज सुन एज इट वेंट अप टू 130 रुपीज़, व्हाट हैपेंस इज आई स्टार्ट टू सेल इट इन मार्केट ऑर्डर. नाउ द लिक्विडिटी, the current liquidity of the market at around 130 for buying orders is approximately 7 crores. Okay, I have 5 crores, I have 6 crores worth of these shares. If I try and sell these 5 or 6 crores worth of share, what's going to happen is the market is going to stall there, the market is going to stay there. So usually the triangle formation, डबल टॉप फॉर्मेशन और एनी फॉर्मेशन, यू नो बेसिकली एक चीज़ होती है मार्केट में ना, ये लोग मुझे बहुत पसंद है, फ़नी लोग होते हैं. तो आई टेल यू समथिंग अबाउट दीज पीपल. सो व्हाट दे डू इज़, सर ये स्टॉक है, बार बार 130 के ऊपर आने के बाद में बार बार जो है 2 बार ऐसे सपोर्ट लिया है, सर वापस अगर ये सपोर्ट पे आता है तो मैं बाय कर लूँ क्या? अब थिंग इज़ कि इफ़ आई से कि बाय कर लो, बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम है. मैं बोलूँगा बाय मत करो और ऊपर चले गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है. तो मेरे लिए डाइसी हो जाता है वो. टू गिव अ ओपिनियन एट दैट पॉइंट इट बिकम्स डाइसी. बट व्हाट्स माई टेक्निक इज़, लेट देयर बी अ रिवर्सल strategy that happens,
let it give a break, let it give a proper reversal, and if a resistance has been created there, I would rather recommend कि breakout होने दो या तो breakdown होने दो, and depending upon that you take a trade, right? But this is not how it goes, okay? Usually अब एक दीवार है, वो दीवार के ऊपर you are hammering again and again with a hammer. What usually happens is the wall actually becomes weaker, the wall actually becomes thinner, right? Similar to that, if the sellers at this point of time have 7 crores and my number of shares are worth 5 crores, I want to buy 5 crores worth of share, what's going to happen? As soon as my 5 crore worth of share has been, basically my money is being used here, the 2 crore amount extra, जो 2 crore का जो difference है, deficit है, उसकी वजह से स्टॉक नीचे चला जाएगा बाद में, राइट? तो सपोर्ट पे बार बार आना, रेजिस्टेंस पे बार बार आना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस. It's actually the opposite. Most of the time it is actually opposite, right? Do not bet like that. It's too risky, it is too heavy to say something like that, okay? So just make sure कि these are minor details, okay? These are very minor details. अब इतने minor details अगर मैं बताने जाऊँगा, पिछले 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, इतने minor details अगर मैं बताने जाऊँगा मार्केट के अंदर, तो मेरा पूरा 7 साल मुझे निकालना पड़ेगा. इतने minor details मुझे लिखने में इन नोट फॉर्मेट, it is too difficult for me, right? So for the same reason I have WhatsApp groups where I basically share my experience and everything with you guys, so that whenever I get a new experience or I remember something, some minor detail, I share it there, okay? So yeah, let me know if you guys have any doubt or something like that. What's my I'll give my final point of view on the current scenario, and I'll just leave, okay? So there are different targets I'm expecting currently. So it went down enough, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, to be honest. Let me just look at 1 hour time frame so that I can make a perfect point of view. 1 hour time frame, higher time frame के लिए ये first wave हो सकती है. It's not that easy though to call it a first wave. First wave के बहुत सारे criterias है. It might fall down, Nifty might fall down further for a few more days, okay? To be honest, by the end of this week, that is tomorrow, if there is a green candle, which is, you know, at a good level, 600 के आसपास भी चले जाए तो it's a good level. The worst case scenario जो है वो टल जाएगा, where everyone is expecting a crash or something like that. I am not expecting a crash. I am not expecting the markets to go down to a very heavy downside level, okay? So just make sure you don't do that. कि बहुत ज़्यादा bearish मत हो, ठीक है? Personal point of view है. If you have your own analysis, well and good. But it's too risky to say something like that. कि the market is going to, you know, market is going to crash down or something like that. Too ambitious. Okay. 200 तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 200 टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. निफ्टी, सो समवन आस्क्ड कि 15200 तक निफ्टी जाएगा क्या? 15200 तक निफ्टी जाना आज के लिए मेरे लिए थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट वाला सिनेरियो हो जाएगा. ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बेरिश. आई एम एक्सपेक्टिंग bounce back from here. I'm expecting a bounce back from here till 600 by tomorrow. Bounce back from the exact support that we have here. Okay, so वो भी एक लिख देता हूँ.
लेट्स सी. एक्सपेक्टेशन ये है, बट ये फाइनल टेक नहीं है मेरा. ये फाइनल टेक नहीं है मेरा. मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं इस साइड में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, I'll just end the webinar here. I'll end the webinar here. Maybe I'll start a new webinar because this is the market depth wala thing, so that people can people can understand this is the area where market depth is. I'll just clip it maybe. I'll just clip it where we are right now. Where did we start it? बहुत देर से देख रहे हैं हम लोग एक्चुअली. 16 minutes, 15 minutes I guess. Maybe 59 sir. Do let me know guys if you have any doubt or any query regarding that. Okay, I clipped it, so कोई दिक्कत नहीं. We'll keep on going on with the webinar, the current webinar. I am expecting a bounce back, good whole bounce back, 15 minute or something like that. Volume बहुत अच्छे आ रहे हैं नीचे गिरने के लिए, लेकिन I'm not that bearish to be honest. I'm not that bearish. Basically mean right, something hard to digest. निफ्टी इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है. नॉट मी आई गेस. तो देखो, HDFC बैंक सुबह बहुत अच्छा मूव दिया था. HDFC मूव नहीं किया था. HDFC मूव किया अभी. कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे जो टॉप बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे, और 11 से लेकर पकड़ के चलो 12 तक भी, 11 से 12 तक भी 0.68% का मूवमेंट दिया. HDFC बैंक ने 11 से लेकर मॉर्निंग 11 टॉप, ठीक है, टॉप से लेके 12 बजे तक पकड़ के चलता है. टॉप टू 12 o'clock. Yes, 12 o'clock. 12 o'clock is here. यही है ना, 12-15 है वो. तो 0.68 वर्सेस 1%. सो HDFC and HDFC बैंक इज अ डुओ. ठीक है, so there are twins, these are twins. So what happens usually is कि HDFC अगर मूव किया, HDFC बैंक भी मूव करता है वही डायरेक्शन में. हाँ, एक चीज़ हो सकती है, एक लीड करता है, एक लैग करता है. राइट, समटाइम्स एक लीड करेगा, दूसरा लैग नहीं भी कर सकता है. ऐसे हो सकता है कि ज़्यादा ही नीचे गिर गया HDFC बैंक, HDFC बस थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, एंड उसके बाद में क्या होता है कि HDFC जो है वो ऊपर बाउंस बैक कर देता है ज़्यादा तेज़ी से, और वो HDFC बैंक को भी ऊपर लेके चला जाता है. दिस थिंग ऑल्सो हैपन्स, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऑलराइट, परफेक्ट.
TCS is already trying to bounce back. I'm not that bearish for the day. ठीक है, गिर गया. I want Nifty to bounce back from here. Expiry है, possible है, इतनी ज़्यादा volatility, yes, very likely possibility. So let's see what happens. I'm here for a few minutes or few hour or half an hour maybe. You can ask me your doubts or whatever you have. Okay, I have clipped market depth, and I have shared the link in. I'll just share the link for market depth. The pinned comments, in case you want to, look at it. I'm expecting TCS to go for gap fill. Where's gap filling though? ये gap fill, yes, possible, very much possible. It is basically making a cup and handle like formation right now. It is very much possible that it would. Very much possible. Let's see what happens. Breakout होने दो. उसके बाद में we can jump into the trade. TCS yes, TCS हो गया. think मैं 1 hour time frame में देख रहा था, इसलिए मैं I can't identify it. Yes, TCS एक हो गया. Infosys हो गया. Infosys, yesterday I wanted to give a trade. Yesterday, day before yesterday, I wanted to give a trade, I guess. 22 की बात है. It was yesterday itself, ठीक है. I wanted to give a trade here, but proper breakout नहीं मिला था. That's why I did not give a trade there. So that was one of the reason. 1 hour time frame में, yes, swing trades. I am observing a few stocks and stuff. I don't see promising, swing upsides coming in. I'm waiting for that. I'm actually bullish. That's what I said. I'm actually bullish on Nifty. I don't expect Nifty to go down further. I'm expecting Nifty to go up from here on. At a certain level, I would scalp. So if you ask me, what's that one level जहाँ से Nifty can give a confirmation of upside coming in for sure? It's, for me, in future, it is 15,430. Support देख रहे हो, resistance देख रहे हो, the resistance here. That's the level where, I am pretty sure if that level is broken out, we can see approximately 485 तक आ जाएगा. वहां तक 485 एंड प्लस भी हो सकता है. 15,485 भी हो सकता है. करंटली बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा. ट्रेड नहीं लिए है, द सेम रीज़न, बिकॉज आई एम श्योरिटी जो होती है, आई एम नॉट दैट श्योर एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट. सो वेट फॉर सम टाइम. Jumping right away into the trade is not something I do. I basically wait for few confirmations. Plus, there is a bullish divergence, you can say. मार्केट नीचे गिर रहा है. RSI इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, बिकॉज ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है. RSI भी. Even if the market went up, RSI उस पर भी react नहीं कर रहा है. That means RSI has something planned already. ऐसे छोटे मोटे मूवमेंट्स के ऊपर RSI झटके से ऐसे मूव कर जाता है. You can see here, नीचे गया था और इधर से बस इधर गया है. इतना सा मूवमेंट है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे मूवमेंट आ गई ना. इतनों से मूवमेंट के लिए इतना ज़्यादा मूव किया है. यहाँ पे उतना ज़्यादा बड़ा मूव है नहीं. This is not the same amount of movement. So for the same thing, RSI भी जो है, it is pointing something else, bullish side. At least I am bullish right now.
ट्रेड कैसे साइड में जाना है, कैसे नहीं करना है, तो वो तो देखेंगे मूवमेंट के ऊपर। बुलिश point of view, market moving in our side, keep my orders ready, पता चल जाएगा, पुट्टा आवाज आ जाएगी मेरे ऑर्डर की। whatever the song, I don't think so आवाज आएगी, you guys won't be able to listen to my orders because desktop audio मैंने ऑफ कर रखा है। NSE website is down, website is down, it's not down। यहाँ पर कॉल साइड एंट्री लेनी है, कॉल साइड एंट्री लेनी है तो 0-0 दे दूँ क्या, मूवमेंट अच्छी आने वाली है क्योंकि 0-0 दे ही दे देता हूँ। टोटल प्रीमियम यार अडानी पोर्ट्स पे क्यों चाहिए, निफ्टी चाहिए बाबा। टोटल प्रीमियम लगेगा, बाप रे प्रीमियम ज़्यादा पम्प्ड अप है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर का फटका देगा अगर दिया तो। ओके आई एम टेकिंग अ ट्रेड, मिनट ओके, अबाउट टू टेक अ ट्रेड 433। सस्ते हैं सारे प्रीमियम सस्ते हैं। 15350 सी में जा रहा हूँ, नहीं 350 नहीं, 15400। थोड़ा ज़ोर से मूवमेंट आने वाली है, ध्यान से जाना बस। आहा आहा आहा, क्या बोलूँ मैं। मेरा 88.73 पे एंट्री है, 58.73 पे एंट्री है इन 15400 सी। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज अर्ली ट्रेड लिया है मैंने। स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली मेरा जा रहा है 15 पॉइंट्स, बट टारगेट जो है 80 तक जाएगा मेरा, 66 राइट नाउ, रेट बाद में बता दूंगा। 67 राइट नाउ, वेयर एम आई गोइंग टू एग्जिट इज अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80। 72, about to exit it, थोड़ा जाओ ऊपर। 58 पे एंट्री है अगेन, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं। 58 से मैं 50 के ऊपर ट्रेल कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस 58, पहले स्टॉप लॉस वॉज 15 रुपीज़, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वॉट एवर इट वॉज। 67, 72,
74.32. I'm done with the scalping trade. 77 के आसपास एग्जिट हुआ मेरा, 75 पे एग्जिट हुआ है, 81. उफ उफ उफ, it hurts me now. Approximately these are the orders you can see. I'm done with the trade. Small scalping trade done quickly. Hopefully you guys traded. What was that? It was just 2 minutes, so I'm done. Done for the expiry move. Not this is not something I I'm actually done, पेट भरा हुआ है ऐसे टाइप वाला नहीं, बट ठीक है ठीक है. It is going in my direction. Scalping trade था, breakout पे usually I trade. If you want to ask me कि क्या पूरा के पूरा उसका target होगा, it can go up to 150 to 178 rupees. ठीक है. It is currently trading at around 84. I'm not going to hold it. I'm already out of it. I am done for the day. आवाज़ दे दो, आवाज़ दे दी सर. ट्रेड हो चुका मेरा सो आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर इट. ब्रेकआउट हो जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी, 130 तक चला जाएगा, 150 to 170 पकड़ के चलो. इट्स 100 करंटली. माई ट्रेड वॉज 58, डबल्ड ऑलरेडी. वन 30 हो गया. अरे तो इफ़ आई कीप ऑन लुकिंग एट इट एंड स्टफ, तो थोड़ा मेरा दिमाग अभी ख़राब हो जाएगा. So what I'm gonna do is I'm just going to wind up the webinar here. Going to get it down here. Good trade done for the day for me. If I keep on looking at it, it's going to affect my day. So it's rather better कि I don't look at it. एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली पे ऑर्डर डाला था, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ. 50 पे सर लिमिट ऑर्डर पे आप क्यों डालोगे ना? यू डोंट प्ले ऑन लिमिट ऑर्डर्स व्हाइल यू स्कैल्प सर. दैट्स समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू डोंट प्ले ऑन लिमिट ऑर्डर्स व्हाइल यू स्कैल्प. व्हाट डिड आई टेल यू? व्हाट डिड आई टेल यू? द टारगेट फॉर माई टारगेट फॉर निफ्टी, my target for Nifty was 15,480, 482 something, 8582 हिट हो चुका है. यहाँ से निफ्टी कैन स्टार्ट टेकिंग रेजिस्टेंस अगेन, okay. I am out of the trade, although if you want to go for the whole thing, if you want to risk for the whole thing, यहाँ पर approximately target you will be getting is 160 to 170. ठीक है, 15,400 CE.
All right, boys. We done. So when you have पहला ट्रेड दिया था मैंने जहाँ पे आई सेड बेरिश है बट आई डिड नॉट टेक द ट्रेड. If basically anyone is a compulsive trader, you can freely take a trade where you want to risk everything. अभी भी बोल रहा हूँ मैं. पहले जैसे बोला था कि तो उस टाइम पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ. क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया? फिल्टर्स. यू शुड हैव फिल्टर्स. अगर आपके पास फिल्टर्स नहीं है कि देखो ये चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें जब तक मैच नहीं होंगी तब तक मैं ट्रेड नहीं लेने वाला. तब तक यू आर गोइंग टू कीप ऑन मेकिंग लॉसेस, राइट? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं लगा, वेगा सही नहीं लगा था, आई डिड नॉट टेक ट्रेड. यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड द वेगा वॉज हाई, द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वॉज अ बिट ऑफ हाई. इतना ज़्यादा नहीं था. 15 पॉइंट्स मैंने लिया था, 15 पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ वॉट द कैपिटल इम्प्लाइड ओवर हियर. बट येट it was good. I knew कि if this level was broken, I knew कि this is going to give a trade. TCS breakout obvious है sir. Without the breakout, the movement cannot come. So basically, even if the breakout and Vega नहीं था, risk to reward ratio was good though. वो भी basically आप बोल सकते हो कि इतना ठीक ठाक था. Yet I took entry. Why? Because मेरे filters सही थे. My filters were right. Okay. So the filters is really important while you trade. TCS, Infosys, सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे. बिना वो मूव हुए हमारा निफ्टी मूव नहीं कर सकता. अगर वो निफ्टी मूव हुआ है तो सारे स्टॉक्स जो आज नीचे थे ये सारे ऊपर गए हैं. What did I tell you in the morning? What I do before entering a trade is create a point of view. Where I look at the market trend, where I look at the stocks which are going to drive the market, where I look at the OI. क्या हुआ? सारी चीज़ें मुझे हेल्प कर दी, right? You get more confidence, and before taking the trade, if you are confident enough about your trade, you are going to end up profiting. Okay? Make sure ध्यान रखो एंड चीज़ें जो है बेसिकली देख के ट्रेड किया. कूल. आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन हियर. अप्रॉक्सीमेटली 40 चल रहा है. निफ्टी और ऊपर जा रहा है शायद से. अप्रॉक्सीमेटली 40 चल रहा है. हमारे टारगेट के आसपास थोड़ा आ रहा है. 50-60 जो मैंने बोला था उसके आसपास आ रहा है. गो ऑन विद दैट. $150 आ चुका है हमारा. 150. Alright. So I'm winding up the webinar here itself. I'm going to freshen up and go on with my regular work, daily work and stuff. So I just woke up and right away came to the PC because I promised the webinar. And I did not want it to miss it. So here we are. Plus market movement भी miss नहीं करनी थी. Expiry है. Expiry is more important. बीमार बाद में देख लेंगे. Targets are done. Okay. Our targets are done. The targets that I mentioned done है. 160 आ चुका है. 155 है. However 160 आ गया. ले लो. Exact ले लो. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. So perfect boys. Perfect. Let's I'll see you tomorrow. Bye bye. Tomorrow or maybe as soon as possible.
बाय बाय।